हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ग्रेटर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ऑर्डर ऑफ नंबर्स पढ़ा था, है ना। हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स को फिर से यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए पेज नंबर 14 पर ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स में बच्चों हम लोग ये सीखते हैं कि वो नंबर कितने बड़े हैं, उनको हम स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर तक असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं, और जो बड़े नंबर होते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर तक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उन्हें जमाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 15 जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, उसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 2,38,631, 84,147, 35,28,146, 5,28,700। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के पहले इनको सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें 10 लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस की पोजीशंस दी हुई हैं, और इस टेबल में हम सभी नंबरों को अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम सारे 5 डिजिट्स नंबर को देखते हैं जो सबसे छोटे हैं, और सबसे छोटा नंबर है 84,147, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। Step number 3. To get the next smaller number, compare the 6-digit number. After 5-digit number, go to the next 6-digit number, and that is 2,38,631 is smaller than 5,28,700. Okay, students. Now, in the step number 4, the last remaining number is 35,28,146, which is 7-digit number, which is the largest number. So, therefore, in the ascending order, numbers will be arranged as 84,000, which is less than 2,38,631, which is less than 5,28,700, and which is less than 35,28,146. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को जमाना भी सीख गए हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर? Descending order means the arrangement of a set of a given number from the largest to the smallest, that is in the decreasing order. To understand the concept of decreasing order, see example number 16. Read carefully. Arrange the following numerals in the descending order. This is 72,48,217, 3,41,847, 85,63,004, and 9,56,893. As like previous, place all these values in the value table, that is place value chart. This is the position of 10 lakh, 10,000, 1,000, 100, tens and ones. So arrange all these numbers and compare the highest value, that is the 7-digit number. Which is the 7-digit number? Yes, 85,63,004, which is greater than 72,48,217. Now after that, step number 3, compare the 6-digit number, that is we can see that 9,56,893, which is greater than 3,41,847. So after arrangement in the descending order, the numbers will be written as 85,63,004 is greater than 72,48,217, is greater than 9,56,893, is greater than 3,41,847. So students, I hope you understand the concept of order of numbers, that is arrangement of ascending order and descending order, or we can say increasing order or decreasing order. Students, now this is the time for homework. See, practice 1.4. Write the successor of the following numbers. These are the numbers. Yes, you have to write its successor. For example, this is 87,019. So what is its successor? Just add 1. Add 1 at the ones place, that is 19. So its successor will be
87,020. Okay students, so you have to do all these numbers and find out. Now question number 2, write the predecessor of the following numbers. So these are the numbers, just you have to subtract 1 from these numbers. For example, this is 74,380. So what is its successor? 74,379. Okay students, I hope आप लोग इन क्वेश्चंस को इसी तरह कर पाएंगे. Now complete the following table. Question number 3. Just you have to find predecessor and successor of all these numbers. For example, 80,000 है. 80,000 का predecessor नंबर क्या होगा? तो इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे और इसमें 1 ऐड करके यहाँ लिखेंगे. तो आपको predecessor और successor फाइंड आउट करने में आसानी होगी और ये टेबल आपका कंप्लीट होगा. Similarly, question number 4, fill less than, greater than or equal to in the blanks. These are the blanks. Here you have to place less than, greater than or equal to sign. Okay students, for example, you have to compare these numbers. This is 31094, that is 31,094. This is 30,194. So which one is greater? This is greater. 31 is greater than 30. So place the greater than sign like this. Okay students, this is H, 82,15,960, and this is also 51,690. So which one is less? Compare it. 82 lakhs, 82 lakhs. This is 15, this is 51. So at the 10,000 place, which one is greater? 5 is greater. So place the less than sign. Okay students, now turn the page number 16. Question number 5. Read carefully. Write the following numbers in the ascending orders. So you have to compare all these numbers, which one is less than, which one is the smallest. So write first 12,590, then 24,400, then 37,248, and then 3,12,488. Students, I hope you have to complete all these questions. Now question number 6, write the following numbers in the descending order. So you have to compare all these numbers, which one is the largest one. See, this is 98,302, this is 89,112, this is 83,494, and this is 38,695. Okay students, I hope you have to complete all these questions in this manner. Students, we have to complete next topic in our next video. Till then, bye.